morning, students. My name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, today we can start the lab experiment for the switch gear and protection subject. So, first experiment number to study the Buchholz relay for the transformer protections. So, diploma students already study of the Buchholz relay. So start with the Buchholz relay. First questions is what is the relay? So as earlier chapter we can learn about the what is the relay. So relay is basically device when the place in the circuit when it protect the circuit by fault, यानी कि जब फॉल्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इट मीन्स कि जब फॉल्ट होता है तब इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए रिले यूज़ होता है. फॉर दिस इट डिटेक्ट्स एन abnormal change in the parameters of the circuit such as the voltage, current, temperature, pressure and others parameters. At that time the relay will be operated, closes the circuit before the any unforeseen happen, so it can not to do it by self, then it gives a tripping signal to the circuit breakers. रिले या जब अब नॉर्मल कंडीशंस यानी कि जो रेगुलर कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम मोटर्स को कंसीडर करते हैं तो मोटर्स में जब फॉल्ट्स होता है या इनपुट करंट एंड द आउटपुट करंट चेंज होता है बिकॉज ऑफ एनी डैमेजेस या एनी वाइंडिंग ब्रेकिंग, एट दैट टाइम रिले ऑपरेट होता है. बट रिले अपने आप ऑपरेट नहीं होता है, रिले सर्किट को ओपन नहीं करता है. रिले एक सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल सर्किट ब्रेकर को मिलता है एंड सर्किट ब्रेकर विल ओपन द equipment or disconnect the equipment in our power systems. So basically we can say that the relay is the device when it is placed in the circuit, then it protects the circuit by fault. So for these detections of the abnormal changing in the parameters. Now this is the basic introductions of the relay. Now start with the Buchholz relay. Yes, you can see here actually the original equipment of the Buchholz relays look like this. So it protect the electrical transformer, and transformer are the static device in the frequency of fault in much less as compared to motors and generators. But the fault protections it can help the entire the power transmissions distribution system. The transformer are as the most important part of the systems. So Buchholz relay can was used in 1921 by the Max Buchholz. Max Buchholz is the scientist जिन्होंने बुकोज रिले को 1921 में यूज़ किया था. जनरली बुकोज रिले इज़ यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है. स्टैटिक डिवाइस में यानी कि
जिसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। और हम सब जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ वाइंडिंग्स और इंटरनल टैंक्स होता है जिसमें ऑयल फिलअप किया होता है। सो उस ट्रांसफॉर्मर के लिए एक बुकोज रिले वन टाइप ऑफ रिले है जो 1921 में मैक्स बुकोल्स रिले नाम के साइंटिस्ट ने यूज़ किया था। अब एक किस लिए यूज़ होता है? सो इट इज़ द गैस एक्चुएटेड रिले यूज इन द ऑयल इमर्ज ट्रांसफॉर्मर। दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मर फॉर ऑफ द हाई रेटिंग, जो हाई रेटिंग ट्रांसफॉर्मर है उसमें इंटरनल फॉल्ट के लिए बुकोज रिले यूज़ होता है। बट जनरली इट इज़ नॉट यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एज अ फ्यूज कैन प्रोटेक्ट देम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फ्यूज से ही हमको प्रॉपर आउटपुट मिल जाता है, इसलिए हम बुकोज रिले वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। सो बुकोज रिले विल प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम कोर हीटिंग, वाइंडिंग फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड इंसिपेशन फॉल्ट। सो हम ये चारों फॉल्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि कोर हीटिंग है, तो कोर हीटिंग इसलिए होता है अगर वाइंडिंग के अंदर दो कॉइल्स, यानी कि हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग्स हमने लैप किए होते हैं या वेव्स वाइंडिंग किए होते हैं, वो दो वाइंडिंग के बीच में एक पेपर इंसुलेशन होता है। कुछ फॉल्ट के कारण अगर वो पेपर वाइंडिंग बर्न हो जाता है और दो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाता है, एट दैट टाइम कॉइल हीटिंग फॉल्ट होता है और वाइंडिंग हीटिंग फॉल्ट होता है। कोर हीटिंग ऑयल में दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि कॉइल के अंदर जो ऑयल होता है, टेम्परेचर बढ़ जाने से वो ऑयल भी हीट होता है और उसकी वजह से कोर हीटिंग भी होता है। देन आफ्टर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दो वाइंडिंग शॉर्ट हो जाने से, एंड इनसफिशेंट फॉल्ट्स, यानी कि दो वाइंडिंग या अदर्स फॉल्ट होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर्स को डैमेज कर सकते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुकोज रिले। नाउ causing. So generally causing causing is made of the weather resistance the cast aluminum alloy provide with the paint coated, यानी कि ये पूरा ट्रांसफॉर्मर्स पेंट कोटेड होता है, जिसको वो इसलिए पेंट कोटेड किए जाते हैं जैसे कि काट ना लगे। यस, काट ना लगे इसके लिए पूरा बुकोस रिले पेंट किया होता है। सो इट्स अप्लाई आइदर विथ दी, सो हियर यू कैन सी दैट द फर्स्ट इज द फ्लेंच, यानी कि जो इनपुट बुकोस रिले में इनपुट वाल्व है उसको फ्लेंच बोलते हैं। देन आफ्टर द थ्रेड कनेक्शंस दो टाइप के होते हैं, हम इसके बाद हम देख लेंगे टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में वही है। सो द फ्लेंच कनेक्शंस, यानी कि वो भी एक अलग टाइप का बुकोज रिले है, सिर्फ पैटर्न चेंज है। सो यू कैन सी हियर। देन आफ्टर to check the switching system for the proper functions, the causing is provided with the sand glasses, यानी कि ये जो है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, यस। सो यहाँ पे जो है, जो इंडिकेशंस करता है क्या सिचुएशंस है, व्हाट इज़ द सिचुएशंस इन द बुकोज रिले, एंड दिस सिग्निफिकेंस is indicated in the side glasses. You can see here this one is, and here this one is, and the last ones, the cap
The relay can be provide with the हिंट लेंस. इट मीन्स टू प्रोटेक्ट द साइड ग्लास, यानी कि इसको साइड ग्लास को बंद करने के लिए यूज़ होता है. नाउ यस, द कवर्स. नाउ देर आर द टू टाइप्स ऑफ covers. You can see here the terminal number one is the terminal box. This is called the both are the terminal box. Then after the cap nut means इसको लॉक करने के लिए कैप नट यूज़ होता है. Then after the earth terminal, then bleeding valves. ये दोनों क्लैप नट्स फिर ब्लीडिंग वाल्व को बंद करने के लिए क्लैप नट्स यूज़ होते हैं. Then after the testing key, you can see here the testing key. Then after the earth terminal, जो ये है दोनों में the middle point of the first line, this is called the earth terminals. यहाँ पे 3 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 3 फेस में अगर है तो RYB फेस के लिए. Then after the bushing, you can see here the bushing terminals. Then terminal box is sealed by the cap. You can see here the seal by the cap. यहाँ पे पूरा पैक हो जाता है. Then after the graphical symbols and connections diagram. So here you can see that the graphical symbol is that, and specifications. Significance means the specifications is also seen that, and cable gland. Cable gland means the, you can see here the connections of the cable. You here. This one is the basic two types of the Buchholz relay. Now the constructions, yeah. So what is the constructions of the Buchholz relay? So Buchholz relay, you can see here, this one is transformer tank with the oil filled, and this one is the core. Then after the Buchholz relay is set up of the here, and this one is the conservator tank. Generally conservator tank will be used for the one type of the small tank of the oil, and Buchholz relay is set up of the between of the conservation tank and transformer tank. So we can say that the Buchholz relay consists of an oil filled chambers. Buchholz relay is oil filled chambers. There are the two hand fluted. So yes, here this one is the Buchholz relay, this one is transformer tank and conservator. So constructions of, we can start with the Buchholz relay. There are the two hang floated, you can see here, one at the top and other as a bottom in the chambers. Each floated is accompanied by the mercury switch. So you can see here this tube is filled with the mercury, and mercury switch on the upper float is connected to the alarm circuit. It means upper is connected with the alarm circuit, and on the lower floating is connected an external trip breakers. It means the to trip the generate the signal for the circuit breakers and
constructions of the Buchholz relay is shown in your figures. So you can see here, this one is the inner connections of the Buchholz relay. So how does the Buchholz relay work? Whenever the minor fault occurs inside the transformer, you can see here the Buchholz relay, अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ भी फॉल्ट होता है and produced by the fault current, the produced heat causes decomposition of the transformer oil and gas bubble are produced. These gas bubble float in the upper directions of the Buchholz relay. The connections gas dissipated the oil on the Buchholz relay and the displaced is equivalent to the volume of the gas collected. So the displacement of the oil cause the upper flow to the close the upper mercury switch, which is connected to the alarm circuit, and hence when the minor flow occurs the connections alarm get activated. The collected amount of the gas indicated the severity of the fault occurs. During the minor fault, the production of the gas is not enough to move the lower fault. Hence, during the minor fault, the lower fault is unaffected. But during the major fault, like the phase to earth short circuited, the heat generated is the high and large amount of gas is produced. This large amount of the gas will similarly flow upwards. यानी कि in the transformer there are the two types of faults, minor faults और मेजर फॉल्ट्स. सो यहाँ पे जो दो स्विच दी हुई है वो यूज़ होती है माइनर फॉल्ट और मेजर फॉल्ट के लिए. अगर माइनर फॉल्ट होता है तब फेस करंट यानी कि फॉल्ट करंट जनरेट होता है एंड वो फॉल्ट करंट ऑयल के साथ केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से वो एक बबल जनरेट करता है और बबल बुकोज रिले में एंटर होता है. अब बुकोज रिले माइनर फॉल्ट में हमको बुकोज रिले ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. सब यानी कि जो माइनर फॉल्ट है उसके लिए हम अलार्म कंसिडर करेंगे. सो अलार्म ऑपरेट होता है तब बुकोज रिले ओपन नहीं होता है. सो इसका दोनों का स्ट्रक्चर्स देख लो. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनर्स. दिस वन is only the floating of the one arm, but in the tripping mercury switch at that time you can see that the hang with the one lead यानी कि एक जो स्ट्रिप होती है उस पर फ्लोटिंग होता है क्योंकि इसको फ्लोट होने के लिए ज़्यादा फॉल्ट की यानी कि मेजर फॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है. सो ये जो है वकोस डिले वो जब माइनर फॉल्ट होता है तब ओनली अलार्म इंडिकेशन करता है और जब फॉल्ट हो मेजर फॉल्ट होता है यानी कि मेजर फॉल्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं कि फिश टू अर्थ फॉल्ट है, इंटरनल फॉल्ट्स है जैसे कि वाइंडिंग बर्न हो गई है या शॉर्ट सर्किट हो रही है इन द ट्रांसफॉर्मर एंड द फॉल्टी करंट्स. जो शॉर्ट सर्किट होती है यानी कि दो वाइंडिंग शॉर्ट होती है तब फॉल्ट करंट जनरेट होता है या लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है. तो वो लीकेज करंट ऑयल जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल टैंक के अंदर जो ऑयल है उसके साथ एक केमिकल रिएक्शंस जनरेट करता है और बबल जनरेट होते हैं. वो बबल्स
बुकोस रिले में यहाँ से एंटर्स होता है। अब वो मेजर फॉल्ट है या माइनर फॉल्ट है उसके हिसाब से बबल अपर की साइड जाएंगे। फर्स्ट हमको अलार्म मिलेगा। अगर जो अलार्म होता है वो इंडिकेट करता है कि मेजर फॉल्ट नहीं है, बट अगर मेजर फॉल्ट होगा तो लोअर स्विच विल बी ओपन, given to the given to the signal for the सर्किट ब्रेकर एंड ट्रांसफॉर्मर को वहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ द बुकोस रिले। सो ये जो है वो तो हमने देखा कि किस तरह से होता है। तो यू कैन सी हियर हाउ द बुकोस रिले वर्क। यस, यू कैन सी हियर अगेन व्हेन द फॉल्ट इज अजर। अगर यहाँ पे जो होता है you can see here, so this one is indicate the major fault and this one is indicate the minor fault. So you can easily see that कि ये जो बबल आ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर टैंक से थ्रू आ रहे हैं। हम यहाँ पे हम आराम से हम इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से फ्लोटिंग होता है इसको। यानी कि अगर मेजर फॉल्ट है तो इसको मूव करने के लिए इंटरनल फॉल्ट होगा और मेजर फॉल्ट होगा तभी इतने बबल्स जनरेट होंगे। अदरवाइज जो यहाँ पे ये जो स्विच है अपर स्विच है उसको ही वो मूव कर सकेगा। माइनर फॉल्ट इतने बबल्स जनरेट नहीं होंगे। सो ये जो स्विच है मर्क्यूरी स्विच है, हाउ इट्स वर्क, मर्क्यूरी स्विच किस तरह से वर्क करता है। सो मर्क्यूरी स्विच इज ऑल्सो you can see that the magnetic oil gauge of the transformer. So yes, this is the working of the switching. This one is constructions, you can see here. This one is the floating, this one is the floating edge। एंड जब फ्लोट होता है तो जनरली ये जो मैग्नेट है in between two magnets the flux will be fluctuated। एंड जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से ये जो डिस्क होती है वो रोटेट होती है एंड उसके रोटेट होने से ये जो मर्क्यूरी स्विच है वो भी अफेक्ट होती है। सो दिस स्विच is constructed device by which we can the level of the liquid or oil inside the tank or conservator of the power transformer and also give us an alter low oil levels indications with the making the mercury switch. So it is the connected in the bottom of the conservator tank which is shown the figures. Yes, so now what is the constructions of this device। yes, ये उसका कंस्ट्रक्शंस है, ये उसका कंस्ट्रक्शंस है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट हाउ इट्स वर्क। सो कंस्ट्रक्शंस एंड द वर्किंग ऑफ दिस MOG मैग्नेटो sorry the magnetic oil gauge। So magnetic oil gauge consists of the inside the conservator device and the magnet positions is fixed outside the conservator tank। yes, outside the conservator tank of the power transformer. The driving the magnet rotates and the acquire the positions corresponding to the high of the level। It link with the floating। इट मीन्स कि ये जो फ्लोटिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे गेज हमको दिखाएगा एंड द swings up down the level or rising or falls the
gauge. So these rise and falls the rotate the driving magnet clockwise or the anti-clockwise directions. ये जो है clockwise या anti-clockwise directions will be moved with the help of the gears. The following magnet carries the point and can pointers read the oil levels and can is set the operate the switch of the predetermined low level you can see here. So ये उसका basic constructions है. So how it's mounting in the some slides हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ slides में होता है क्यों. So indicator can be mounted in the turtle positions towards the ground. It means the approximately 30 degree for the easy viewing of the fixing mounting pad of the desired angle. It means that the indicator can be mounted by keeping the dial and mounting a pad in the vertical positions. The positions of the indicator on the conservator can be selected to the suit side conditions, and the alarm circuit only the normally open the mercury switch is provided for the low level alarms. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉरी ये जो दो स्विच है यहाँ पे हम वर्टिकल फॉर्म में रखते हैं और यहाँ पे हम स्टेडी पोजीशंस में रखते हैं. यू कैन सी हियर दोनों कंडीशंस. इसलिए अलार्म को हम सिर्फ इंडिकेशंस के लिए हम नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं. नाउ हाउ इट्स वर्क द गेज हमने देखा. So you can see here when the floating balls will be rotated, and at that time you can see that the gauge will also be rotated, and this one is using for the open the alarm as well as the circuit breakers. So now advantages of the Buchholz relay is the Buchholz relay is that indicate the anticipated fault. For example, it is in case of the fault between the turns or heating of the core which enable to take the transformer out of the service before the service damage occurs. Buchholz relay gives the alarm and oil level reduces below the certain level due to the leakage of the oil tank also indicate that, and the Buchholz relay gives the audible warning which informs the operator that there is the some fault in the transformer. जो अलार्म सर्किट है वो जो इंडिकेट करती है कि इंटरनल फॉल्ट है बट माइनर फॉल्ट्स है. सो टाइप्स ऑफ द इंसुलेशन फेलियर्स द ट्रांसफॉर्मर कैन ऑल्सो डिटेक्ट बाई टेस्टिंग द गैस. सो ये सारे एडवांटेजेस है बट उसकी Buchholz relay have some limitations. So limitation is this type of relay can use only the transformer with the conservator, यानी कि कंजर्वेटर टैंक के बिना. अब कंजर्वेटर टैंक क्या करती है, जो बबल्स होते हैं जो अपर के साइड होते हैं, अब जैसे हीट जनरेट होता है तो जो ट्रांसफॉर्मर हमें और एज वेल एज बुकोस रिले में जो ऑयल होता है उसका लेवल बढ़ जाता है बिकॉज द डिफॉर्मेशंस ऑफ द ऑयल जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है ऑयल की वो होगी. तो जब जब डिफॉर्मेशंस होगा तो ऑयल लेवल बढ़ेगा. तो ऑयल लेवल बढ़ा उसके लिए वो एक स्टोरेज में भी होना चाहिए क्योंकि जगह होनी चाहिए. तो उसके लिए कंजर्वेटर टैंक यूज होता है. तो विदाउट द कंजर्वेटर टैंक दिस बुकोस रिले इज नॉट यूज. द रिले डज नॉट operate when the fault above the oil level.
The Buchholz relay does not protect the cable associated with the transformer below. बुकोज रिले सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए ही है, कोई आउटर फॉल्ट यानी कि बाहर के जो केबल्स है उसमें फॉल्ट होता है तो बुकोज रिले इज नॉट एप्लीकेबल्स or not operated. The setting the mercury switch cannot be too sensitive, otherwise there can be false operations due to the variations, earthquake and mechanical shocks to the pin. यहाँ पे अगर कोई भी वाइब्रेशंस होगा, अगर मर्क्यूरी स्विच प्रॉपर सेट नहीं किए करते हैं तो वाइब्रेशंस हो रहा है या अर्थक्विक हो रहा है तो वो भी एक फॉल्ट कंडीशंस लेके मर्क्यूरी स्विच विल बी गिवन द ऑपरेशन टू द अलार्म एंड एज वेल एज द ओपन द सर्किट ब्रेकर and the operationals is unsatisfactory due to slow operations time. Generally operations time होता है 0 to 0.1 सेकंड नियरली. सो वो स्लो ऑपरेशंस मूवमेंट है क्योंकि हमको जब फॉल्ट होता है तब माइक्रो सेकंड्स में काम करना पड़ता है. सो दिस आर द limitations of the Buchholz relay. So here your worksheet, only in the experiment we you can write only the worksheets questions. The first question is what is the relay, what is the relay is used for the transformer, sorry, why the Buchholz relay is used for the transformer, which type of protections is protect or covered by the Buchholz relay, how the Buchholz relay work, write the advantages and disadvantages of the Buchholz relay. You can write your enrollment number, name, and write down the experiment number 1 and send the files in Google Classrooms. If any query regarding this experiment and any questions regarding this experiment, you can call me and mail me. My mail ID and the contact number is in your screens. Thank you.